ये कह के दिल ने मेरे हौसले बढ़ाए हैं, ये कह के दिल ने मेरे हौसले बढ़ाए हैं, गमों के धूप के आगे खुशी के साए। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेसन है कि जो है कुछ ऐसा मैजिक क्यों ना बताया जाए जिसको सिर्फ प्रैक्टिस करने से ही हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होना शुरू कर दें। क्योंकि जितना हम मेहनत करते हैं, जितना हार्ड वर्क करते हैं वो तो है, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा भी चीज़ ऑटोमेटेड मोड पे रख दिया जाए ताकि जो है वो भी काम करे और हमारा एफर्ट और वर्क भी चलता रहे, ताकि जो ये दोनों जो चीज़ मिलकर जो है सो एक सेम फ्रीक्वेंसी पे अगर मैच कर जाए तो वो रेजोनेंस के फॉर्म में आता है। और रेजोनेंस आपको पता है कि रेजोनेंस इज कॉल्ड व्हाट, राइट? सो रेजोनेंस में जब सेम फ्रीक्वेंसी से जब दो ऑब्जेक्ट टकराते हैं, उनके नेचुरल फ्रीक्वेंसी से दो ऑब्जेक्ट जब टकराते हैं तो उसका जो एम्पलीट्यूड जो होता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। ओवरऑल मैं आपको सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि जब दो लोगों का एफर्ट एक साथ जब मिलता है तो ऑब्वियसली आउटकम जो रिजल्ट होता है बहुत काफ़ी होती है। सो माय डियर स्टूडेंट, तो मैं कुछ ऐसे टेक्निक जो बताऊंगा मैं, जिसको जस्ट आप फॉलो करो, सम मैजिक विल स्टार्टेड, बट यू शुड नॉट ओनली डिपेंड ऑन दिस ऑटोमेटेड, बट यू हैव टू वर्क हार्ड एंड बी put all your effort, whatever you can able to give to succeed in your life, your dream, right? So first thing is that always you should be positive mindset. Always आपको जो पॉजिटिव रहना है, आपको कहाँ भी किसी भी तरह का आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट अगर आता है तो यू शुड हैव टू जस्ट रिमूव, यू शुड से दैट नो, आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ नेगेटिव थॉट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने डिसाइड किया है कि I want to just crack UPSC examination, I have already invested, I have wasted 3 to 4 years, but I am not able to achieve it, right? इस तरह का नेगेटिव थॉट हो सकता है। और you have just started any business and then if it is not working out, some negative thought will click and then it will say that it is more than enough, just you should have to give up. Some negative thought will come, you should say no. You should say no. You should be positive even the thing is coming very disaster. If the thing is not coming in support, right? If you have the confidence, you know better than others. I don't want to demotivate you, but nobody knows other than you. You know better. If you are confident, if you are sure, if you have all kind of skills, if you have all those such talent, everything you know better than others. You should not care any others what they are talking to you, right? अगर वो दूसरे लोग आपसे बात करते बोलते नहीं तुमसे नहीं होने वाला है, यूपीएससी एग्जामिनेशन तुमसे होने वाला नहीं है भैया, जस्ट यू हैव जस्ट लिव इट। और नीट एग्जामिनेशन और जेई एग्जामिनेशन या किसी भी तरह का आप जो बिजनेस आप कर रहे हो भैया आपसे होने वाला नहीं है। आप क्या करो भैया, आई नो माई सेल्फ, आई नो माई स्ट्रेंथ, आई नो माई पोटेंशियल। There you should have to be firm if really you are confident with yourself, right? Always be positive. If the thing is not in favor, just always be positive. First thing, just keep in your mind. Second thing is that always you should be kind. You should be helpful. You should be help for any other situation, whatever you can capable to do. Don't play any kind of politics. Don't play with others. Don't disturb any other ones, right? Don't. So this is your ethics. If you are doing whatever you are doing, other person may not be knowing, but only one person know well what you are doing, that is your God. You are whatever the activities you are doing in front of the God. God knows everything. You can hide someone, you can hide your friends, you can hide your relative, anyone, but keep in your mind that God is watching you, right? So always should be thick, should always help to others, whatever you can do help, right? Third thing is that magic, you understand the power of subconscious mind. आप जैसे पॉजिटिव करते हो कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड को शिफ्ट होता है, और शिफ्ट जैसे ही होता है वो मैजिक शुरू हो जाती है।
मैं बहुत सारे वीडियो में सबकॉन्शियस माइंड के बारे में एक्सप्लेन किया हूँ, मैं बताया हूँ, लेकिन जो आपको ये चीज़ प्रैक्टिस करना है कि भाई ओके एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, ओके नथिंग टू वरी, सब चैलेंजेस इज कमिंग, लेट इट शुड कम। चैलेंजेस अगर नहीं आएगी तो आप स्ट्रॉन्गर नहीं बन पाओगे। लेस चैलेंज शुड कम बट यू शुड हैव द टैलेंट हाउ टू ओवरकम दो चैलेंजेस। यस, sometime it is not favor in you but Almighty watching you how long you can able to sustain। आपको प्रेशर लेना पड़ेगा, डायमंड बनने के लिए आपको प्रेशर लेना पड़ेगा, राइट? इफ रियली डिजर्व, डेफिनेटली यू कैन गेट सक्सेस। सो थिंग इज दैट यू शुड ऑलवेज शिफ्ट योर माइंड conscious to subconscious. Just don't disturb your subconscious. You fill your subconscious mind with all those achievements, all those success, all the positive thought. You should be away from negative people who is disturbing you, who is demoralizing you, demotivating you, right? So just keep in your mind. And the most important thing is that gratitude. Gratitude is one of the most important pillar, राइट? अगर आप ग्रैटिट्यूड का मतलब समझ जाए तो समझो कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। ग्रैटिट्यूड, व्हाट इज कॉल्ड ग्रैटिट्यूड? आपको एक सिंपल somebody have help, you should have to be thankful to that particular person. You should be thankful to with your parents, you should be thankful to your Almighty, you should have to thankful to your friends, relatives who have helped even in little. Always should be thankful. So you should be always on the ground, okay? Be cool and calm, be ground, okay? You should